हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट क्लब में। आज हम करेंगे टॉपिक 3.1 द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट a powerful symbol that could unite the nation. On 31st January 1930, he sent a letter to Professor Irving stating 11 demands. Some of these were of general interest. Others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. The idea was to make the demand wide ranging so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by rich and poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive phase of British rule. Mahatma Gandhi letter in a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irwin was unwilling to negotiate. So Mahatma Gandhi started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi. The volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what is meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law, manufacturing salt by boiling sea water. This marked the beginning of civil disobedience movement. How was this movement different from the non-cooperation movement? People were now asked not to refuse cooperation, not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of the government salt factories. As the movement spread, foreign clothes was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. Village officials resigned. And in many places, forest people violated forest laws, going into reserve forests to collect wood and graze cattle. Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent slashes in many places. When Abdul Jafar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolized British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931. By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference. The Congress has boycotted the first round-table conference in London, and the government agreed to release the political prisoners. In December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiations broke down and he returned disappointed. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations, and boycotts. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. अब तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अब तो सॉल्ट मार्च निकालना पड़ेगा। अब तो धमाका करना पड़ेगा। अब तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनना पड़ेगा, राइट? So that was the plan now. सॉल्ट मार्च भी डिस्कस करते
लेते हैं, बट उससे पहले गांधी जी ने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है, what is that one thing which everybody uses, what is that one thing that rich also uses, poor also uses, Hindu also uses, Muslim also uses, Dalit also uses, Brahmin also uses, Kshatriya also uses, Britishers also use and Indians also use. तो ऐसी कौन सी चीज है, राइट? और गांधी जी को चमका यार नमक है वो. So Gandhi ji saw potential in salt. Gandhi ji thought that salt should be a powerful medium to unite the entire country. क्योंकि सब लोग खाते हैं यार, अमीर गरीब, राइट, दलित ब्राह्मण, हिंदू मुस्लिम, सब लोग खाते हैं नमक, और नमक पे थी मोनोपोली. The salt was monopolized. The salt's production was monopolized in the colonial India. ब्रिटिशर्स पता क्या करते थे? इतनी इंपॉर्टेंट चीज, सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रिटिशर्स नेवर अलाउड इंडियंस टू प्रोड्यूस इट. इंडियंस को प्रोड्यूस ही नहीं करने देते. तो कहते थे हम ही करेंगे, हमसे ही सॉल्ट खरीदना पड़ेगा, और ऊपर से तुम्हारे सॉल्ट पे लगेगा टैक्स, दैट यू वुड बी टैक्स्ड फॉर सॉल्ट, यू कांट प्रोड्यूस सॉल्ट. दिस इज नोन एज सॉल्ट लॉ. तो गांधी जी ने बोला salt law, let me break that. So Gandhi ji wanted to break salt law and many other things with this newfound excitement which is known as salt march. तो गांधी जी ने फिर से एक बड़ा सा बढ़िया सा एकदम एकदम क्या बोलते हो आप, एकदम चमकदार एक लेटर लिख दिया. Gandhi ji wrote a brilliant letter to Lord Irwin. Gandhi ji wrote that letter to Lord Irwin, और गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था. गांधी जी ने बोला था बहुत हो गया तुम्हारा बच्चू, वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन, बहुत हो गया, अभी अभी मेरी 11 डिमांड है, आई हैव 11 डिमांड्स एंड यू हैव टू फुलफिल दीज डिमांड्स बिफोर अ पर्टिकुलर डेट. तुम्हें एक पर्टिकुलर डेट से पहले ना ये डिमांड्स को पूरा करना है. नहीं करोगे तो फिर मैं गारंटी नहीं देता कि मैं क्या करूं, फिर तुम देख लो, फिर आगे जो होगा तुम संभाल ही नहीं पाओगे. So Gandhi ji gave an ultimatum to Lord Irwin and demanded for 11 things, and in these 11 things salt law was one of it. ठीक है जी, लॉर्ड इरविन भी कम नहीं थे. लॉर्ड इरविन को टाइम दिया गया था 11th of March तक का. लॉर्ड इरविन was provided the time until 11th of March. Lord Irwin did not fulfill even a single demand. एक भी डिमांड उन्होंने पूरी नहीं की. गांधी जी के चुप बैठने वाले थे. हमें कोई एक्साइटमेंट की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं. गांधी जी ने बोला अच्छा बच्चों, you thought I was kidding? No, I was not kidding. Now you see what I'm going to do. So when Lord Irwin did not fulfill our demands, गांधी जी शुरू हो गए चलना. गांधी जी ने निकाल दिया सॉल्ट मार्च. 12th March 1913, 78 trusted volunteers started marching. Can you believe it? इतने एजड थे गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा. He left साबरमती आश्रम, started walking towards दांडी. दांडी की तरफ बढ़ने लगे. दांडी was 240 miles away. दांडी was 24 days away. गांधी जी was not tired. हर दिन 10 माइल चलते थे गांधी जी. Every day he will walk 10 miles, take some rest, walk again. That was the resilience. That was the perseverance of our father of nation, right? और finally गांधी जी reached Dandi on 6th of April 1930. और गांधी जी did what he had. नहीं किया. ना कोई पटाखे छुड़ाए, ना कोई बम फोड़ा, ना कोई बंदूक उठाई. He just made a handful of salt and he said, Britishers, this is India. You can't control us. I am going to break every unjust law that you make for my country. And that was the power of Gandhi. फिर क्या था बच्चा पार्टी? पूरा देश हुर्रे करने लग गया, बल्ले बल्ले करने लग गया. We will learn about it, but before that is your quiz question. How many demands were there in the letter that Gandhi ji wrote to Lord Irwin? महात्मा गांधी ने जो The answer is A, 11. Definitely. और गांधी जी के सॉल्ट मार्च के बारे में और बात करते हैं. गांधी जी तो अपना काम करके साइड हो गए, ठीक है. गांधी जी did salt march and गांधी जी made some salt and गांधी जी was now like chilling. गांधी जी was like अब मेरे देश वाले देख लें. Indians are going to take it forward. And that's exactly what happened बच्चा. पूरा भारत सिविल disobedience पे उतर आया था. अब before I tell you what were Indians up to, I am going to give you 5 marks for your final exams. Yes, you heard me right. 5 नंबर की पते की बात बताती हूँ. हर नॉट ऑल्टरनेट बट पिछले 10 सालों में कम से कम 2 या 3 बार तो ये क्वेश्चन आ ही चुका है. द क्वेश्चन इज
what is the difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. Priya Bacha, I hope you are watching it. At the start of the session, you had asked me this question. See, I am catering to you. ठीक है? Gaurav, hello. सॉल्ट मार्च को डाडी मार्च क्यों कहते? क्योंकि नाम दीजिए बच्चा. If I'm going to Mussoorie, I'll call it a Mussoorie trip, no? No, Supriya. Disobedience movement. The first difference is that both of them started in a different decade. Non-cooperation 1920s, civil disobedience 1930. Non-cooperation का मतलब है don't cooperate with the Britishers. But civil disobedience means that break the laws. तो definition ही different है दोनों की, right? Third point. Non-cooperation ended after Chauri Chaura incident, but civil disobedience ended with a pact between Gandhi ji and Lord Irwin. बोलोगे मैम ये तो बताया नहीं आपने. बताऊंगी थोड़ा सा थमो, right? And point number 4. All farmers participated in non-cooperation, but they did not participate in the civil disobedience. तो ये तो हो गए 4 point. Women participated in civil disobedience, they did not participate in non-cooperation, right? ये सब भी आप इसमें लिख सकते हो. Non-cooperation started with surrendering the titles. Civil disobedience started with the salt march. ये भी लिख सकते हो. कुल मिला के I am giving you 6 points here. You are full prepared for your 5 marks in the final exam, and that's why I asked you to join the session. And don't forget to like the video, okay? कोई बच्चा पार्टी लाइक नहीं कर रही है. चलिए आगे. तो जब गांधी जी ने अपना काम कर दिया, and he was chilling, right? He was just chilling. He was like, my Indian fellows are gonna take it forward. That's exactly what happened. पूरे भारत में सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया. पूरे भारत में अनजस्ट कॉलोनियल रूल्स को लोग तोड़ने लगे. फॉरेन क्लोथ्स अभी भी बॉयकॉट हो रहे थे. लिकर शॉप्स, अल्कोहल शॉप्स अभी भी पिकेट हो रही थी. पीसेंट्स जो है उन्होंने कहा जाओ, नहीं देते तुमको रेवेन्यू, नहीं देंगे टैक्स, जो कर सकते हो कर लो, राइट? विलेजेस ने बोला कि हम, विलेजेस के ऑफिशियल्स ने बोला, जो इंडियन ऑफिशियल्स थे, कि अब हम तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेंगे. इनफैक्ट the people who were dependent upon the forest area, they said we are not going to follow the forest rules. So overall शहर में, गली में, नुक्कड़ में, गांव में, ट्राइबल एरिया में, हर जगह लोग अब कॉलोनियल रूल्स के लॉस को तोड़ने लग गए थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? वही जो हर बार करती थी, हर बार brutal repression. The government arrested a lot of leaders from the Congress party. एक-एक करके चुन के कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था. पूरे देश में क्लैशेस हो रहे थे. When you think about it, it might sound like a story, बच्चा, but it happened. Can you imagine? From Jammu and Kashmir to Kerala to Gujarat to Arunachal Pradesh, the entire country was protesting, right? और अब्दुल गफार खान, जिन्होंने पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उठा रखा था अपने कंधों पे, he also got arrested. He is also known as Frontier Gandhi. Frontier Gandhi को जब अरेस्ट कर दिया ना, तो लोगों ने पेशावर में खूब प्रोटेस्ट किया. लेकिन 1 महीने बाद गांधी जी को ही अरेस्ट कर दिया. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो शोलापुर में लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया अगेन, बट ब्रिटिश पुलिस वाज नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी. 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. विमेन, चिल्ड्रन, मेन, क्या औरतें, क्या आदमी, क्या बच्चे, सब लोगों को अरेस्ट कर रही थी ब्रिटिश पुलिस, राइट? सरोज arrested for leading the CDM in पेशावर. पेशावर का सिविल डिसोबीडियंस कौन कर रहा था? The answer here is C. Abdul Ghaffar Khan. फिर से मूवमेंट को कॉल कर. गांधी जी तो परेशान हो गए थे. गांधी जी लाइक, मैं बोलता हूँ सत्याग्रह करो, इंडियंस लड़ाई करने लग जाते हैं, पुलिस लड़ाई करने लग जाती, मैं क्या करूँ यार, पीसफुली हो ही नहीं पा रहा है. गांधी जी had to call off the civil disobedience movement and गांधी जी was convinced by एक ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अपने जाल में फंसा लिया. That was Lord Irwin. लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को समझाया that गांधी जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो चलो जरा. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है लंदन में, आप चलो तो सही, आपको बहुत मजा आएगा. बैठ के बात करेंगे गांधी जी, बैठ के बात करेंगे कि प्रोटेस्ट करने में क्या रखा है. गांधी जी was convinced by Lord Irwin to attend the second round table conference in the London because Lord Irwin knew कि गांधी जी अगर यहाँ रहे तो उनके मंसूबे पूरे नहीं. Britishers cannot succeed if Gandhi ji is in India. तो गांधी इरविन पैक्ट बन गया भाई. 5th March 1931 को गांधी एंड इरविन went into a pact. पैक्ट का मतलब नेगोशिएशन. गांधी जी ने बोला मेरे सारे लीडर्स को छोड़ दो, जिन जिन लोगों को अरेस्ट
Gandhiji to come to London. Gandhiji was asking for release of the political prisoners. दोनों लोग अपनी अपनी बात मनवाने पे तुले हुए. Finally, Gandhiji went for the round table conference. ये जरा देखो देखो, आपको टेबल की साइड में गांधीजी दिखेंगे, चश्मा लगा के, शॉल ओढ़ के. That's Gandhiji. So our Gandhiji attended the second round table conference in December 1931 in London. उनको लगा था यार कुछ अच्छा निकलेगा, है ना, कुछ अच्छी बात निकलेगी, कुछ बैठ के बातें करेंगे, कुछ सुधर जाएगी इंडिया की कंडीशन. ऐसा हुआ क्या बच्चा पार्टी? Gandhiji's negotiation broke down in the conference. बात तो बनी नहीं, दाल तो गली नहीं. In fact, Gandhiji had to come back to India disappointed. गांधीजी को वापस आना पड़ा, खाली हाथ, टाइट राइट. वापस आए तो देखा कि इंडिया का माहौल ही बदला हुआ है. When he came back to India, he realized that there is a new cycle of repression going on. एक नया तांडव चल रहा है रिप्रेस करने का भारतीयों को, राइट. Point number 1, गफार खान arrested. Point number 2, Jawaharlal Nehru arrested. Point number 3, Congress party illegal. Point number 4, all the Indians suppressed. तो ये 4 पॉइंट लिख के आओगे पेपर में. 3 मार्क का ये क्वेश्चन आता होता है. दिस क्वेश्चन कम्स for 3 marks, very very important, that describe the new cycle of repression. और इसी से हमें पता चलता है कि गांधी जी को फिर से मन तो नहीं था, but गांधी जी reluctantly had to restart the civil disobedience, relaunch the CDM movement. अब क्या हुआ relaunching में? CDM version 2.0 पढ़ेंगे next time. Until then, तो आज की वीडियो यही स्टॉप करते हैं. हम पढ़ेंगे how participants saw the movement in the next video. If you like the video, please subscribe to my channel, hit the like button and enjoy watching videos. Thank you.